using properties of determinant prove that this determinant equals to AQ plus BQ plus CQ minus 3AC। ये क्वेश्चन 2020 के पेपर कोड 6542 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। डिटरमिनेंट हमने कर लिए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में इन दो कॉलम्स में ऑपरेशन हम यूज करने जा रहे हैं। Either we should use C2 is changed by C2 plus C3 or C3 is changed by C3 plus C2। तो एक ऑपरेशन हम लगा रहे हैं कि C2 को चेंज कर रहे हैं C2 plus C3 से। क्या बनेगा देखिए, A minus B, B minus C, C minus A, and it becomes B plus C plus A, and here it becomes C plus A plus B, and here A plus B plus C, and this column should be as it is. Now just see column C2. In each entry it is A plus B plus C, so we should taking common A plus B plus C from C2 column से हम A plus B plus C कॉमन लेंगे। After taking common we have A plus B plus C, determinant should be left C minus A, here should be 1 1 1, and here A B C. Now we get all entries 1. So whenever we get 1, that is good for us. So now we should try to remove at least 2 ones to 0. So for that, applying R2 is going to change R2 minus R1, and R3 is going to change R3 minus R1। दो ऑपरेशंस एक साथ ले रहे हैं, R2 में R1 को सेपरेट कर रहे हैं और R3 में भी R1 को सेपरेट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा। A plus B plus C, and this should be the R1 should remain as it is, and here R2 में R1 सेपरेट हुआ है, इसमें से इसको सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए क्या है, B minus C we have, this should separate this one minus A, because B it becomes 0, it becomes B minus A। In same way R3 में से R1 को सेपरेट करते हैं, it gives you C minus A plus B, and here becomes 0, and it is your C minus A। ठीक है, अब डिटरमिनेंट हमें क्या मिलेगा उसको लिखना है। We have now A plus B plus C, and determinant we have A minus B 1 A, and here it should be the 2B minus C minus A, 2B minus C minus A, 0 B minus A, and it should be the C minus 2B, C minus 2A, C minus 2A plus B. Whatever we get, we should write it 0, and it is your C minus A. Now in second column we get 2 zeros, so we should split this determinant with entry 1. When we are taking 1, just you leave rows and columns. We should leave this row and this column. So the remaining thing should be A plus B plus C, and this position of 1 is with A1 2, so we should write minus 1 here and into 1, and the determinant remains
A minus B, and here is we have 2B minus C minus A, and here B minus A, and here C minus 2A plus B, and this is your C minus A. In 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट का अब मल्टीप्लिकेशन करना बाकी है, तो ये -1 हम सबसे पहले लिखते हैं. नाउ स्प्लिट इट. दिस इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस 2b minus c minus a, so we multiply c minus a, we take minus sign in middle and multiply c minus 2a plus b with b minus a. Now split the bracket. This gives you 2bc minus 2ab. This minus c gives you minus c square plus ca minus ac plus a square. First bracket. Here is the minus sign, so write minus and split this one. cb, c multiplied with a, ca minus 2a minus 2b minus 2 with a 2a square, and b with p gives you b square, and b minus c minus p. Now see, we have minus a plus b plus c in bracket. This ac should be cancelled out with ac. In this bracket we have 2bc minus 2ab minus c square plus a square. And in this bracket, this CB now becomes minus C. This CA becomes plus C. This 2AB and BA, this both becomes plus 3AB. And here minus 2A square plus this becomes minus b square. When we split, we are getting this one. Now we should observe it, what we get in the last. Here we should continue it. We have minus a plus b plus c, and in bracket if you observe, we have a square with minus 2a square minus a square. Here minus b square, here minus c square. And what are other things? Just see, here is minus 2ab plus 3ab. So we have plus ab. 2bc, and here minus c, that is plus bc. And ca is only one, so we should write here c. So if we take minus, we should multiply this minus inside this bracket. We should get a plus b plus c in bracket. A square, b square, c square minus ab minus bc minus c. So that is nothing but what we have to prove: a cube, b cube, c cube minus 3ab. That is your answer. Means when we proceed stepwise, we can get easily the result. So you can see this one is an identity of this one. So whenever we get this, we can write that one. Okay. Now we take next question. Using property of determinant, prove that this determinant equals to a minus b, b minus c, c minus a, in bracket a plus b plus c, and next bracket a square b square c square. सबके मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर फॉर्म में राइट साइड लिखा गया है. ये क्वेश्चन सेट 65(1)(2) में था और इसी साल का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का क्वेश्चन.
इसकी प्रूविंग देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमें कुछ सिमेट्री दिख रही है। इस कॉलम में अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले एंट्री को स्प्लिट करते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आएगा। और हमें राइट साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, तो हम इसी का यूज करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यूजिंग C1 कॉलम को चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 माइनस 2 टाइम्स C3। तो क्या डिटरमिनेंट बनेगा देखते हैं। दैट्स टू द b स्क्वायर हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस it should be the a square, and here we have taken minus 2 times c3, तो 2bc आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड में यूज करते हैं, सेकेंड एंट्री c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ca प्लस b स्क्वायर माइनस 2ca। इसमें भी ऐसे करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर bc ca ab। लास्ट वाली एंट्री एज इट इज है। अब इसमें से हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो रहा है और हर एक एंट्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। लेकिन कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1 कॉलम से इसको हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड इन नेक्स्ट में we have एंट्री 1 1 and here a square b square c square and it will be the bc ca a। देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट में तीनों एंट्री 1 आ चुकी है। तो मैंने आपको बताया था कि whenever we get all 3 entries 1, we should try to remove 2 entries 0 by applying operations। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? अभी हम इसको 0 करना चाह रहे हैं और इसको 0 करना चाह रहे हैं, तो यू अप्लाई ये ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं कि R2 को चेंज करने जा रहे हैं R2 माइनस R1 से और R3 को भी चेंज करने जा रहे हैं R3 माइनस R1 से। ये दोनों ऑपरेशंस हम एक साथ कर रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और ये आपकी फर्स्ट एंट्री एज इट इज रहेगी 1a स्क्वायर bc, और ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ca माइनस bc आ रहा है और इस वाले में 0 आएगा। यहाँ पे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये ab माइनस bc हो रहा है। ये हमें एक नया डिटरमिनेंट मिल गया जिसमें 2 zeros आ रहे हैं और यहाँ फर्स्ट एंट्री 1 है। अभी हम स्प्लिट करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ जो कॉमन्स हो रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, उनको बाहर लेंगे। सो वी गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड डिटरमिनेंट वी हैव 1 0 0 एंड अदर एंट्रीज आर a स्क्वायर now we should take common। Here we take in b minus a common and from there c minus a। R2 में से b minus a कॉमन ले रहे हैं और R3 में से c minus a ले रहे हैं। What the left thing should be b square, here should be the b plus a and it should be the c plus a, and this entry should be bc, and here we have taken b minus a common, so minus sign left
and here again minus b we have. So now we can split it, but if we apply one more operation, then it should be the calculation should be easy. So for that we should take one more operation, that is using R2 is going to change R2 या R3 किसी में भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं. R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3 से. b square bc and it should be 0. Here b plus a minus c plus a, that gives you b minus c, and here minus c minus b, that gives you b minus c, and it should be the 0. Here should be the c plus a and it is minus. Again we can take b minus c common from R2. This R2 has b minus c, so we should take out b minus c. So that things should be the 1, 0, 0, b square 1, c plus a, and here bc, here 1 and here minus b. So now we should split it. So when we split, we get the result. For splitting, we should see here. This should, as it is, here is the b minus a and we have to put a minus b, so we should take minus common and write it as a minus b. And here is the b minus c we have, we should write it as b minus c, and is c minus a we have, so we should write it as c minus a. And now split with this one. When we split उसके बाद हम यहाँ आगे देखते हैं. A square, b square, c square, and next bracket we have b minus a. So we should write it as minus times b minus a. That b becomes a minus b, and it is again b minus c, and next one is c minus a. And डिटरमिनेंट को हम क्या करने जा रहे हैं, 1 से इस 1 के इक्वल स्प्लिट करते हैं. सो वी कैन गेट माइनस बी माइनस टाइम सी माइनस ए. ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर इसके साथ इस माइनस को कॉमन लेते हैं, इसको बना देंगे. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हियर ए माइनस बी, b minus c, c minus e, and in this bracket we get a plus b plus c. That is your RHS. So in this way we are able to prove. So in case of determinant, whenever question is asked, just you target what we need and proceed according to that. By applying operations you able to solve it. और आप डिटर्मिनेंट में आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या ले सकते हैं. कॉमन अगर लेते हो आप तो तुरंत आपको डिटर्मिनेंट के अंदर 1 अवेलेबल हो जाएगा, और 1 अवेलेबल होने के बाद वी शुड ट्राई टू मेक एटलीस्ट 2 1s 0. 2 1 को हम 0 करेंगे, और जब वो 0 बन जाएगा तो उसके बाद हम एक सिंगल जो रहेगा एलिमेंट उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्प्लिट कर देते हैं. तो आप कुछ क्वेश्चंस और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े लेंदी भी होते हैं, लेकिन अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए. आई होप यू डू इट. सो नाउ थैंक यू.